Assalamu alaikum. In this sitting, we shall discuss what is federalism. This topic is segmented in various subtopics. 1. Concept and meanings of federation. 2. Questions raised by this debate. 3. Necessary institutions and political processes for successful operation of a federation. 4. Intergovernmental relations. And 5th, its importance and suitability for heterogeneous countries or multilinguistic, multi-regional, multi-interest countries. So first, conceptually, modern federalism is a structure as well as process. It has two distinct connotations. Number one, conceptual dynamics of the society. According to this, policymakers accept the reality that the given society is based on multi-dimensional pluralism. It is comprised by multi-ethnic groups. They have different economic interests, disparity in development. They are multi-regional, multi-linguistic society. So they have to accommodate conflicting interest in some time in one organization. Theoretically and legally, or in legal framework, it refers to a certain arrangements of powers within the constitutional framework of a country. Definitions. William Ricker, he is of the opinion the activities of the government are divided between regional governments and central government in such a way that each kind of government has some activities on which it makes final decisions. Ayaz, he summed up in a way, self-rule plus shared rule. Self-rule plus shared rule. और उसके मुताबिक जो कम्युनिटीज हैं, रीजनल कम्युनिटीज हैं, वो सेल्फ रूल एंजॉय करती हैं और जबकि मरकज में नेशनल लेवल पे वो उसको शेयर्ड रूल जो है वो एंजॉय करती हैं. So political autonomy of sub-national governments in policy making. Federalism characterized by two spheres of governments, national and state governments, operating in one political entity according to defined arrangement of sharing powers. So neither is sovereign over other. यानी इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है या सब नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो तमाम अपनी अपनी डोमेन में काम करते हैं, अपनी शनाख्त को भी बरकरार रखते हैं और वो एक स्पेसिफिक नेशनल अरेंजमेंट में पावर शेयर्स कर रहे होते हैं. उनमें से कोई दूसरे पर सावरन नहीं होता, बल्कि बहुत ही अपनी अपनी उनकी एंटिटी होती है. बीर, successful federalism requires robust democracy in which citizens share membership of two political communities and participate politically in both. तो इसमें सिटीजनशिप जो है बियर के मुताबिक वो दो सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं फेडरलिज्म में. सो फेडरलिज्म एक्चुअली जो ऐसे ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है और उनके डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उन ममालिक के अंदर ये एक स्ट्रक्चरल डिसेंट्रलाइजेशन की बेस्ट डिवाइस है. बेस्ट डिवाइस इसको समझा जाता है. इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बल्कि वो इसमें पायनियर है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया,
بہت سے اکثر و بیشتر ممالک جو ہیں وہ فیڈرلزم پر یقین رکھتے ہیں اور فیڈریشن کے تحت اپنے ملک کو چلا رہے ہیں. اس میں 3 ڈیبیٹس ہیں اس وقت جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. 3 ایشوز ہیں, میجر ایشوز اور ڈیبیٹس. نمبر 1, to what degree the central government has powers to exercise. Number 2, to what degree the units enjoys autonomy. Number 3, to what degree the units be able to act independently and ڈسٹریبیوشن آف پاورز. یعنی 3 ایشوز. پہلا کہ سینٹرل گورنمنٹس اپنے پاس کتنی پاورز ریٹین کرتی ہے, کتنا کنٹرول رکھتی ہے, کتنا ڈومینیٹ کرتی ہے. دوسرا, پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ کس حد تک پاورز ان کو ٹرانسفر ہوئی ہیں اور کس حد تک وہ اپنی پاورز میں جو ہے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے کی اختیارات رکھتے ہیں. اور تیسرا جو ہے جو سب یونٹس ہیں ان کو کس حد تک آٹونومی حاصل ہے. Various institutions are prerequisite for successful operation of a federation. For example, written, first and foremost, that is written constitution. This is a requirement for successful operation of any federation. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض اوقات ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا کہ وہ اس میں یونٹری سسٹم میں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے, لیکن فیڈریشن کے سکسیسفل ہونے کے لیے یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے. بائی کیمرل لیجسلیچر. تھرڈ, انسٹیٹیوشنز اینڈ پروسیس. فورتھ, جوڈیشل ریویو. ففتھ, well-defined division of powers. These are 5 institutions or 5 requirements for successful operation of a federation. Written constitution, that is difficult to amend. The function of written constitution is specifying the division of powers or competencies between the national and state governments. یعنی بڑا واضح ہے. اور دوسرا, فیڈرل کانسٹیٹیوشن serves the dual functions, creates the national institution of government with specified powers, guarantee the continuity of sub-national states or provinces with their powers. اب آپ دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہونے کی حیثیت سے اس میں امینڈمنٹس نہیں ہو سکیں گی, جس کی وجہ سے کوئی چھوٹا صوبہ ہے یا بڑا صوبہ ہے اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ واضح طور پر وہاں پہ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی اکثریت کی بنیاد پر یا کسی اور پاور کی بنیاد پر اس کو بلڈوز نہیں کر سکتا. اور یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کا ہی تو رائے امتیاز ہے کہ وہ پہلے نمبر پر تو ان سب نیشنل یا پروونسز کو کریٹ کرتا ہے. فیڈریشن جو ہے اس کو جنم دیتا ہے, وہ اسی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. اور ان جو کریشن آف سب نیشنل گورنمنٹس ہیں, اسٹیٹس ہیں, بلکہ امریکہ کے کیس میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا. امریکہ پہلے اسٹیٹس تھی اور اسٹیٹس نے یونائٹ کیا اپنے آپ کو اس کے فلیگ کے تحت. اس لیے امریکہ میں جو ہے فیڈریشن کی نسبت اسٹیٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پاور حاصل ہے. بہرحال وہاں پہ اسٹیٹس کو کافی, جو پروونسز ہیں ان کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے, تو ان میں کافی ان کو اختیارات حاصل ہیں. فیڈرل کانسٹیٹیوشن جو ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشن 2 فنکشن کرتا ہے. ایک تو ان گورنمنٹس کو کریٹ کرتا ہے, ان کی پاور اسپیسیفائڈ کرتا ہے, اور پھر دوسرے نمبر پر سب نیشنل اسٹیٹس جو ہیں, گورنمنٹس جو ہیں, پروونسز جو ہیں, ان کی پاورز کو گارنٹی بھی کرتا ہے, ان کی کنٹینیوٹی کی گارنٹی وہ دیتا ہے. سیکنڈ, بائی کیمرل لیجسلیچر ود اے اسٹرانگ فیڈرل چیمبر ٹو ریپرزینٹ دی constituent units. Bicameralism is an essential institution for representing the sub-national governments in national legislature. آپ یہ دیکھیے کہ bicameralism پاکستان جس طرح سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہم bicameralism ہے, تو وہاں پر جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں ہاؤس آف پیپل
लोगों की आप कहेंगे कि पार्टिसिपेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जबकि हाउस ऑफ यूनिट जो है सेनेट हमारे यहाँ है, तो बकिया जगह पे मुख्तलिफ उसमें हो सकते हैं। अमेरिका में सेनेट है और इसी तरीके से है, तो वहां पे पब्लिक पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ, और वहां पे हाउस ऑफ यूनिट्स जो हैं उनको नुमाइंदगी दी जाती है, हाँ कोई बड़ा है कोई छोटा है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। और ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ है। कनाडा जो है उन्होंने अपने प्रोविंसेस के ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उस बुनियाद पर उन्होंने उसको किया हुआ है, मुख्तलिफ मालिक में मुख्तलिफ है। थर्ड, सुप्रीम आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स को स्पेसिफाई कर देता है, इन ब्रॉड सेंस वो उनको बयान कर देता है, लेकिन उसके बाद जजेस हैं जो कोर्ट हैं वो उनको इंटरप्रेट करते हैं और मुख्तलिफ केसेस के जरिए से अप्लाई करते हैं, उनकी वजाहत करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट जो है सुपीरियर कोर्ट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं, बाकी ममालिक में भी। अब यह है कि कुछ ममालिक ने सिर्फ इसी पर्पस के लिए कोर्ट्स रखी हुई हैं सुपीरियर, वो सिर्फ फेडरेशन के मामलात को देखते हैं, लेकिन बास जगह पे जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उन्हीं पे पाकिस्तान में जो है सुप्रीम कोर्ट ये मामलात को भी देखता है, जुडिशियल रिव्यू पावर्स उसके पास मौजूद है। फोर्थ, गवर्नमेंटल और इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रोसेस है और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस के बगैर स्ट्रॉन्ग इटर्नल वायबल इंस्टीट्यूशंस आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ फेडरेशन। ये होना बड़ा जरूरी है। इसमें आप ये देखें कि लिचफोर्ड, वाट्स, इन लोगों ने बास जगह पे सिर्फ ऊपर वाले तीन दिए हैं, लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस को उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन ये भी अपनी जगह पे है कि उनमें बैलेंस ऑफ पावर्स उन दोनों उन प्रोविंसेस और उनके दरमियान हो, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन मजबूत जो है उनका होना बड़ा जरूरी है। और प्रोसेस है पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल प्रोसेस का सपोर्टिंग होना बड़ा जरूरी है, पॉलिटिकल कल्चर का डेवलप होना बड़ा जरूरी है कि जो मुख्तलिफ इस चीज को अंडरस्टैंड करते हों कि इंटीग्रेशन में उनकी ज्यादा कामयाबी हो। इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस रिकॉर्ड है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है? सो कंपैटिबल एंड कंजीनियल पॉलिटिकल प्रोसेस for the huge countries. So ये federalism is popular in modern state system. Federalism can provide an institutional basis for ethnically distinct people, but paradoxically that can also facilitate secession. डोनाल्ड हॉर्विट्ज जो है इसके कहने वाले हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि फेडरेशन वो डिवाइस है कि जो मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रीजनल, जो ऐसे ममालिक जहां पे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मौजूद है, जहां पे अदर काइंड ऑफ पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज मौजूद हैं, उनमें फेडरेशन एक बेस्ट डिवाइस के तौर पे काम करती है। दिस इंश्योर्स नेशनल इंटीग्रेशन। थैंक यू very much.